गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज हम लोग हनोई में हैं अभी एंड हम लोग जा रहे हैं हलोंग बे के टूर पे। तो टूर का जो प्राइस है वो है $45 एंड ये सिर्फ 1 डे का टूर है। जो 2 डे वाला टूर होता है थोड़ा सा महंगा होता है, अप्रॉक्सीमेटली $65 या $70 का, बट ये 1 डे वाला टूर है $45 का। तो हमारी बस आ गई है। നല്ല കുഞ്ഞാണ്, ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാം. Fine. Are you today? Yeah. Thank you. Yeah. You see the weather today? How was the weather? It's good or not good? Not good. Not good? I think very good. For the people who go to Vietnam. So right now we're going at the end. अरे हॉर्न बंद करो, उड़ा दो, कचर दो। Now we're at the end of the summer time and the beginning of the autumn. Yeah, that's very cool weather. सो हम लोग हलोंग बे के हाफ रास्ते पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए जो है बस रुका हुआ है। तो जिसको रेस्ट रूम यूज़ करना है वो रेस्ट रूम यूज़ कर सकता है, जिसको कुछ खाना पीना हो खा पी सकता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से हम लोग को क्रूज़ में एंटर करने को मिलेगा एंड हम सब 1 डे वाला टूर है। बस में काफ़ी लोग थे जो 2 डे वाला टूर भी कर रहे थे। सो अपना अपना जो लीड होगा वो एक फ्लैग कैरी कर रहा होगा। तो जैसे हमारा वाला रेड वाला फ्लैग कैरी कर रहा है तो हम लोग को उसको फॉलो करना है। एंड इसमें जो है वो लंच इंक्लूडेड है, जो कि अभी हम लोग को ज़्यादा ही मिलेगा। ये हमारा क्रूज़। चलो जी। Hello. हेलो। Hello. Oh, very Darren, welcome to the boat. Welcome Halong Bay. You hungry now? Very hungry, right? Yeah. Set up for the boat already. How are you going? We enjoy the lunch on the boat. So remember that your lunch is the tour. It's just drink. You want to bring something? Get off on the boat. You pay for drink. When you're on the boat, you pay for that. And on the boat, we got 2 sides for 2 happy room. We got 2 bathroom, both sides. But the boat. You want to go up? Let's go. Going up, let's go. But you know, when the boat stop, not allowed for tourists going up. सो हमारी बोट यहाँ पे आकर रुक गई है एंड जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं उधर पे। एंड जो लोग इस माउंटेन को ट्रैक करना चाहते हैं विच इज़ अराउंड 400 स्टेप्स ओनली, तो वो ऊपर जाके ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो येस, आई वुड बी ट्रैकिंग एंड नॉट स्विमिंग।
यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, जिसको शॉपिंग करनी हो थोड़ा बहुत कर सकता है, एंड फूड स्टॉल्स भी हैं। सो जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे एक छोटा सा बीच है विच लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे लोग स्विमिंग कर सकते हैं, एंड हम लोग तो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। तो ट्रैकिंग में फिर मैं और रोहित जा रहे हैं, क्योंकि अनुपम के पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी। सो यहाँ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 45 मिनट्स। You can hiking up or go swimming over there. Yeah. ओके, सो हाइकिंग के लिए इधर से रास्ता है, ये टी टॉप आइलैंड है। Cứ cho vào kia, cho phát đứng kia chỉ thẳng lên này là xuống tắm tắm tầm 40 phút đâu đây. Thẳng lên là tắm lên luôn. This way. Wait. You want to walk, right? Yeah. Want swimming? No. Out this way. सो यहाँ से स्ट्रेट चालू होगा। No, 145 at the boat, right? Sure. Okay. So we have 45 minutes to do this 400 step ka hike, and I guess many people are coming. कल जो फांसी पान वाला ट्रैक किया था, उसके बाद थोड़ा सा थक गए हैं एंड थोड़ा टफ लग रहा है ये, बिकॉज सिर्फ स्टेप्स ही स्टेप्स हैं। ऊपर मिलते हैं यार, ऐसे देखोगे तो बोर हो जाओगे। सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप एंड लेट मी शो यू द व्यू। This is how great it looks. तो ये हम लोग ने दूसरा स्टॉप लिया है, एंड यहाँ पे हम लोग कायाकिंग कर सकते हैं या बैम्बू बोट राइड कर सकते हैं। तो कायाकिंग तो बहुत ज़्यादा करी है, एंड उसमें ना शॉर्ट्स चाहिए होगा, क्योंकि कायाकिंग में गीला हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं बैम्बू बोट के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द बैम्बू राइड एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक लाइक। सो वी विल क्रॉसिंग दैट केव। And this is our boat driver. So we have a lot of people, and you can see. So what's your name? Noemi Dums. If I'm getting famous, I'm pretty happy. Belgium, from Belgium. She is from Belgium. From Japan. She is from Japan. And where are you from? Germany. Germany. And you guys? Singapore. India. ये अपने भाई लोग। That's why I didn't want to kayak. I'm afraid like I fall in the water. Start. These are the people kayaking. Ooh. So you can join us.
उसके बाद हम लोगों ने कायाकिंग या बैम्बू बोट राइड में से चूज़ किया एंड उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक सरप्राइज केव विज़िट पे। तो इसका जो एंट्री है वो उधर से है एंड एग्जिट इज़ फ्रॉम दैट साइड। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, आपको केव का व्यूज़ दिखाते हैं। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द केव। कितना चढ़ाना है इसमें? चलता रहे 2 किलोमीटर। And that's the cave. We discovered the cave in early 19th century. Originally in 1911, by French people. The French people, at that time, the Vietnam was occupied by French. So the cave we divide into 3 parts. The first one, the small one. You go second one, the bigger, and last one, the big and long one. You go around. You see, we got only one way to go up here. Go inside the cave, look around, and we go back there. And the boat waiting over there. This is boat have moved ready. So in short, इस केव का एंट्री एक है एंड एग्ज़िट एक है। So जिसको करना है वो आगे जाए पहले एंड एक पॉइंट आता है वहाँ से वो रिटर्न कर सकता है एंड एक लंबा वाला रास्ता है वो उसमें 40 मिनट्स लगेगा। So that's how it goes. So this is a place to click a picture. Carry him. Carry me. So अगर आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे पानी है। चलो लड़कों। सो अगर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता तो मैं तो ज़रूर जाता, बट यहाँ पे एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस है। सो दिस इज़ हाउ क्राउडी इट इज़। तो यहाँ पे सर भी झुकाना पड़ रहा है कहीं कहीं। यार ये बहुत सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है। ये वाला केव तो अभी स्टार्टिंग में है, पहला वाला है एंड यही इतना सुंदर लग रहा है। तो जो फोंग ना के बांग जो नेशनल पार्क है वो एक्चुअली केव्स का ख़जाना है। तो वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी केव है, तो वो भी हम देखने का अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। सो द व्यूज़ आर प्रिटी अमेजिंग एंड इसका 40 मिनट्स का तो मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि ऐसे करके पूरा रास्ता जाता है जिसमें साइड में फेंसिंग लगी है। This is actually very beautiful. So we are almost near to the exit and this cave tour is now coming to an end. So we have our boats waiting and we just have to climb up and we'll go down after that. But one thing I won't say, there are a lot of stairs in Vietnam. So ये Halong Bay का टूर खत्म हुआ and now we are going back to Hanoi and there's something special for you guys.